Resources Geography Class 8. Hello everybody, this side Learners Hub. My name is Mishka Gupta. You all are welcome to my new YouTube channel. It's Learners Hub. It's my first video. So, in this video, we'll be going to study about resources. So, in the resources, the contents are types of resource, which include natural resources, man-made resources, and human resources. Types of natural resources based on development and use, based on origin, based on stock, based on distribution. Third, conservation of resources, and the last and fourth is principles of sustainable development. In your mind, the question first put up, what is a resource? रिसोर्स क्या है? रिसोर्स वो चीज़ है जिसकी वजह से हम अपनी जो भी एम है, जो भी पर्पज़ है, वो पूरा करते हैं. वट एवर इट इज़, वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग सर्वाइव करते हैं. रिसोर्स इज़ एवरीथिंग, वट एवर इट इज़. It can be anything like air, water, whatever it is. They are also a resource. We can convert resources also. Now we'll be going to first study about types of resources. First, natural resources, man-made resources. Third, human resources. We'll be going to study about natural resources. What are natural resources? Natural resources are those which are made by nature. जो नेचर में है, जो हमने नहीं बनाए, जो भी हमारे आसपास है, कोई भी सराउंडिंग लाइक प्लांट्स, ट्रीज, वाटर, एयर, सन, they are natural resources which are not made by us. Now we'll be going to study about man-made resources. What are man-made resources? Man-made resources are those which are made by us, जो हमने बनाए हैं. जो चीज़ नॉन लिविंग है वो होती है मैन मेड रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. लाइक इट कैन बी एनीथिंग, बिल्डिंग, हाउस, स्कूल्स, वट एवर इट इज. It is called man-made resource. Any non-living thing is man-made resource. Now I am going to explain you about human resources. What are human resources? ह्यूमन रिसोर्सेज वो होता है जिसकी वजह से हम लोग स्किल्ड हैं, इम्प्रूव्ड हैं, एजुकेटेड हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ चल रही है. लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ स्कूल. इन द स्कूल अ टीचर इज टीचिंग. विद द हेल्प ऑफ टीचर वी आर एजुकेटेड, वी कैन पास अ क्लास. बट अ टीचर इज अ ह्यूमन रिसोर्स. शी इज टीचिंग अस, he is teaching us. That is called the human resource. Now we can take the example of a country. A country is not skilled without cannot be skilled without a human resource. Until it is educated, skilled, improved. There are their own skills. उनके वो खुद के स्किल्स हैं जिनकी वजह से वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं. एजुकेशन में उनका जो कंट्री है वो अच्छा है. It can be anything. We can be take a state also, a city also. एक सिटी है जो टेक्नोलॉजी में, स्टडीज़ में, या फिर एक कंट्री है जो स्पोर्ट्स में अच्छी है, टेक्नोलॉजी में अच्छी है. There are people which are skilled and improved. They can be only. They are उन्हीं की वजह से, जिनकी वजह से हम लोग एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, इम्प्रूव्ड हैं. दे आर कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज. अ टीचर इज टीचिंग अस. टीचर जो हमें पढ़ा रही है वो एक ह्यूमन रिसोर्स ही हुई, जिसकी वजह से स्कूल चल रहा है. स्टाफ इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स. द होल स्टाफ इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स. स्टाफ नहीं आएगा तो स्कूल नहीं चल पाएगा. सो ह्यूमन रिसोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ.
Now we'll be going to study about types of natural resources. It is based on level of development and use, actual and potential resources. What are actual and potential resources? Actual resources are those which we are using in the present and which we can use in the further also, in future also. Actual resources: sun, water, air, minerals, whatever it is, plants, trees. We are cutting trees for our needs. But it is called actual resources. On the other hand, we have potential resources which are yet to be developed. जो अभी डेवलप्ड होने रहते हैं, जो अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो आगे चल के क्या पता यूज़ हो, जिनका डेवलप होना अभी ज़रूरी है. It is come in the base of development and in the base of use. They are actual resources which we are using at present. Potential resources are used which have to be further developed, which are yet to be developed, जिन्हें डेवलप होना रहता है अभी. वो अब उसके एग्जाम्पल हैं कोल और पेट्रोलियम. ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अभी डेवलप्ड होने रहते हैं, एंड they are coming in each and every resource, like non-renewable and renewable, ubiquitous, localized. They will become in localized also. They will become in non-renewable also. They will not come in abiotic and biotic, because we'll be going to discuss further about, on the next slide we'll be going to discuss abiotic and biotic resource. Origin: biotic and abiotic resources. What are biotic resources? Which are natural, which is supporting us, with the help of which we are surviving, which are living things, not surviving but which are living things, जिनकी वजह से हम survive कर पा रहे हैं अभी. Like living things ले सकते हैं हम, plant, trees, humans, plant, animal, trees. These are come in biotic resources. And in abiotic resources में वो चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, like air, water, and whatever it is, and man-made resources. Air and water are natural, but they come into the category of abiotic. वो abiotic की कैटेगरी में आती है. उन्हें हम बायोटिक में नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग. नॉन लिविंग थिंग जो भी चीज़ है वो सारी एबायोटिक की कैटेगरी में आएगी. दे कैन बी मैन मेड रिसोर्सेज, वट एवर इट इज. We are going to study about stock on basis of stock, renewable and non-renewable resources. What are renewable resources? Like actual resource which can be used again and again, like water, air, plant, trees. We can use them again and again if we grow them. We can use trees and plants if we grow them. We can use them again and again. They come into the category of renewable resources. But in non-renewable resources, we have coal, petroleum, which can't be used again and again. They are made in millions of years. उन्हें बहुत साल लग जाते हैं बनने में. कोल ले लो और पेट्रोलियम, उन्हें कई सारे साल लग जाएंगे और सिर्फ वो यूज सिर्फ एक बार ही हो सकता है, बिकॉज इट इज एग्जॉस्टेड. वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ये रिसोर्स. तो दे कम इन टू द category of non-renewable resources. Now we'll be going to discuss distribution. On the basis of distribution, ubiquitous and localized resources. What are ubiquitous resources? Which are from everywhere resource. It can be man-made resource also. It can be natural resource also. Whatever it is, like air, water, sun, solar energy. Not electrical, because electrical energy is not provided anywhere. It will become
in localized resources. Electrical energy will come in localized resources which is not found everywhere, जो हर जगह नहीं पाई जाती चीज़ें. कोल है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये सारी पाई जाएंगी आपको अलग अलग जगहों पे, जो अलग अलग जगह पे पाई जाती हैं, जो हर जगह नहीं होती. They come into the category of localized resources. Let's revise them. Ubiquitous are found everywhere, but localized are not found everywhere. Their examples of ubiquitous are air, water, sun, solar energy. And in localized resources, the examples are electrical energy, coal, petroleum, etc., which are not found here. Now we'll be going to discuss our third topic, third content, which is conservation of resources, sustainable development. Now, conservation of resources is very important thing in our life. We need to conserve them for a further use, so that we are not able to face a single problem of that resource in our future. जो हम अपने फ्यूचर में आगे चल के उस चीज़ की स्कार्सिटी ना फेस कर पाए, हम वाटर को ले सकते हैं. वी कैन कंजर्व वाटर, we can conserve trees, we can conserve plants, so that in the further use we don't have the scarcity of them. Without trees and plants we will not have oxygen. उनके बिना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती. We are studying this from a very small class. Plants and trees provides us oxygen. So if we conserve them, then there will be no scarcity of oxygen in the future. Scarcity नहीं होगी ऑक्सीजन की in the future. So for no scarcity, we need to conserve the resources, and it is very important. वो बहुत ज़्यादा important है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसी चीज़ का जुडिशियस यूज़ करना, उसको कम से कम यूज़ करना विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को डैमेज ना पहुँचा के उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसका जुडिशियस यूज़ करना. इट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. This is our third content, and it is the end of third content. And the fourth content is principles of sustainable development. First principle is respect and care for all forms of life. We should respect and care for all forms of life. We should respect our resources. हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. Second, better quality of human life. बेटर क्वालिटी के ह्यूमन लाइफ की बेटर क्वालिटी के लिए हमें रिसोर्सेज जो हैं वो कंजर्व करने पड़ेंगे. इट इज़ अ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नाउ थर्ड प्रिंसिपल, conservation of Earth's biodiversity. Whatever it is present on Earth, we need to conserve them for a further use, for a future generations. Fourth principle, proper attitude and practices towards the conservation of environment. We should show proper attitude, and we should keep practicing to conserve the environment. We need to conserve trees, प्लांट्स. हमें कंजर्व करने चाहिए प्लांट्स और ट्रीज़ को, जिससे कि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो. एम्पावरमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ टू टेक केयर फॉर देयर ओन ग्रोथ. कोई भी लोकलाइज्ड एरिया है, आपके घर के पास पार्क है या फिर कोई भी गार्डन है, तो उसकी टेक केयर हम कर पाएंगे, या फिर जो उस पार्क या गार्डन के दूर रह रहा है वो कर पाएगा. ऑब्वियसली वी विल बी एबल टू take care for a nearby garden and parks. It is our also duty to take care of that. कि हमारी भी ड्यूटी है कि हम उस पार्क की या गार्डन की, जो भी हमारे आसपास कुछ भी पड़ता है, कोई भी जगह पड़ती है, अब हम अपनी आसपास की स्ट्रीट्स को ही ले सकते हैं. वो अकेले उस फाउंडर या फिर गार्डनर की ड्यूटी नहीं होती उस जगह की टेक केयर करना. इट इज़ आर ड्यूटी ऑल्सो. वो हमारी भी ड्यूटी है कि हम
उस पार्क या गार्डन जो भी हमारे आसपास है उसकी हम टेक केयर अच्छे से करें. So these are the end of our content. Thanks for watching my video. You liked my video, then please hit the like button, subscribe my channel, and please press the bell icon for the latest updates. And do share also my video. You can connect with me. You can follow me on Instagram, my Snapchat. The both IDs are same, Mishka Gupta. But the username of Snapchat is Mishka Capsulock G3547. It is the username of my ID. Please do connect with me, and I hope this was so understandable, and I hope it was helpful for your study for the resources chapter. I hope I'll be able to post my video soon in further days. Thanks for watching and keep supporting.